Hello, my dear students of class 10th. My name is Sunando Devnath. I welcome all of you to the channel of Imavit Academy. We have started with your semester 2 portions of computer applications for your board examinations of 2022. Your exams are coming very soon, and you all have to be in full study mode right now. We have started with the unit arrays, and we have had 2 lectures on my channel. I have made a separate playlist so that you can find your semester 2 lectures very easily and you don't have any problem to find them. So you will go to my playlist section. You can see there is a separate playlist named semester 2 ICSE computer applications, where you will find all these lectures arranged in a proper sequence. Now, once I finish with this unit arrays, I will move to the next unit, which is string handling in Java. And then I'll move to encapsulation and library classes in that manner. So we will complete the full syllabus of your semester 2. Now, if you look at the portion given by the council, I'll take you to the portion given by the council for your semester 2 examinations. I hope you can see on the screen this is the reduced syllabus prescribed by the council. So we are doing this unit arrays. So you see what topic we have already covered and what is left. So definition of arrays we have done. Types of arrays we will do today. Declaration of an array we have done. Initialization of arrays we have done. Accepting data of single dimensional array, this we will do today. Accessing the elements of a single dimensional array, इसका कुछ पार्ट हमने lecture 2 में कर दिया and कुछ पार्ट हम आज भी करेंगे कि how do we access each and every element of a single dimensional array. So today what we are going to look at these topics, my dear students. Types of arrays जो आज के वीडियो में हम towards the end देखेंगे, and we will learn accepting data of a single dimensional array. ये सारी चीजें हम करेंगे. All right, हमने और क्या क्या कर लिया है? What topics we have already done are these things. If you see the italics में लिखा हुआ array as a composite data type. मैंने lecture 1 में ही ये बताया था कि array is a composite data type and not a primitive data type. आज हम लोग क्या करेंगे? Length statement to find the size of an array. This is also what we are going to see today. Length statement to find the size of the array. तो जो भी चीजें हमने अभी ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है, टाइप्स ऑफ एरेज, एक्सेप्टिंग डेटा ऑफ अ सिंगल डायमेंशनल एरे एंड लेंथ स्टेटमेंट टू फाइंड द साइज ऑफ द एरे, इसको आज हम डिस्कस करेंगे इस थर्ड लेक्चर में. इसके बाद हमारा बाकी क्या रह जाता है? सर्च टेक्निक्स बाकी रह जाता है, एंड वेयर वी विल डिस्कस लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. ये सारी चीजें, ठीक है. लेट अस मूव टू टुडेज lecture. All of you get ready very quickly with your notebook. I hope you are maintaining your notes, which I'm providing very nicely and very systematically. These notes are all in all notes. You can prepare only through these notes and get very good marks, excellent marks, full marks in your semester 2 examinations. Let us start the chapter, continue with this course. I request all of you that you add more and more students to this course. You tell your friends that Sunandu sir is doing this course of semester 2 on YouTube, and that is also for free, so that everyone and a large number of students can get benefited out of this. This is very important. I don't want to limit this course only to a small group of students, but I want to spread it to a large number of students. So I need your cooperation in doing this. When you help others, then God helps you too. All right, let us now continue. So the first thing that we are going to learn, the first topic, is the length of an array. All right, तो मैंने ये बता दिया था पिछले लेक्चर में कि लेंथ का मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे. ठीक है, जैसे मेरा एरे है, सपोज a इज द एरे, इंट a, द नेम ऑफ द एरे इज a. इसमें मैंने स्टोर किया 269, 3 एलिमेंट्स. सो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? द लेंथ ऑफ दिस एरे इज 3 बिकॉज देयर आर 3 एलिमेंट्स stored in the array. And index number,
2 का 0 है, 6 का 1 है, 9 का 2 है. So the last element का index number is 2, but the size of the array या length of this array is 3. Length of this array is 3. यहाँ तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये 3 है. अब there is a code, there is a code, there is a particular keyword with which you can actually find out the length of an array. First of all, the definition of length of an array is written. The length of an array is the number of elements present in the array. This is simple. You already know this. Now, to determine the length of an array, the following syntax may be used. Syntax क्या है? Array name dot length and a semicolon. मतलब कि यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एरे को यहाँ इनिशियलाइज किया गया है. Here there should be a semicolon. Here an array whose name is A has been initialized. The data type is int. There are 4 elements present in this array. उसके बाद हमने क्या यूज किया है? int len. Len कोई भी एक वेरिएबल है len नाम का, int डेटा टाइप है. उसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? a डॉट लेंथ सेमीकोलन. अभी अभी हमने सिंटैक्स पढ़ा कि हम कैसे लेंथ निकाल सकते हैं. एरे का नाम देन डॉट लेंथ एंड सेमीकोलन. एरे का नाम तो a है इसलिए a लिखा गया यहाँ. एरे नेम इज a, फिर डॉट and then length and a semicolon. So a dot length semicolon will give the length of a array. A means the name of the array is a. So इस array का length है 4. तो इसका जब हम प्रिंट करेंगे len में क्या स्टोर हो जाएगा? 4, because a dot length semicolon returned 4 and 4 got stored in the variable len. अब नेक्स्ट स्टेप में जब मैं len को प्रिंट कर रहा हूँ system.out.println, तो क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा. सिमिलरली इस क्वेश्चन में जो मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिखा था, इसकी लेंथ 3 है. तो अगर मुझे 3 को लेना है, अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं int से l, इस बार len की जगह मैंने l ले लिया, फिर लिखेंगे एरे का नाम डॉट लेंथ एंड सेमीकोलन. तो a डॉट लेंथ, इन दिस केस द a हैज 3 एलिमेंट्स, सो a डॉट लेंथ विल रिटर्न 3 to this variable l. अब मैं अगर l को प्रिंट करना चाहता हूँ, system.out.println, l को प्रिंट करना चाहता हूँ, so 3 will be printed. So ये बहुत ही सिंपल है, किस तरह से हम लेंथ ऑफ एन एरे को निकाल सकते हैं. ठीक है, कोडिंग के हेल्प से. नाउ इस पर प्रोग्राम्स आ सकता है. मींस यू नीड दिस, एक्चुअली यू नीड दिस कोड लेंथ, दिस कीवर्ड in many of the programs. We will do a few programs of this type in this lecture. We will do at least one program today in this lecture where we will use this keyword length. Let us move to the next slide. Now the next topic that we are going to discuss is inputting elements into an array, जो कि हमारे अभी सिलेबस में भी देखा था हमने, लिखा हुआ था ना accepting data into the array, लिखा हुआ था. There was a topic accepting data into an array. That is the same thing, inputting elements into an array. मतलब अभी तक हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितना भी डिस्कस किया था, उसमें जो प्रोग्राम्स हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, देयर द एरे वाज इनिशियलाइज्ड इन द प्रोग्राम इटसेल्फ. प्रोग्राम में ही हमने एरे को इनिशियलाइज कर लिया था, यूजर से हमने वैल्यू नहीं लिया था. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. यूजर विल गिव द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे. Okay, this is what we are going to learn today in this topic. It's a very, very important thing. Now, listen here, my dear students. Suppose you have an array which is declared. You have declared an array. Say the array name is ARR. And this is how we declare an array. Int ARR is equal to new int. And say the size of the array is 5. मान लेते हैं इसमें 5 elements को हम store कर सकते हैं. अब ये जो 5 एलिमेंट्स हम इस एरे ARR में स्टोर करेंगे, दोज एलिमेंट्स आर टू बी इनपुटेड बाय द यूजर. द यूजर ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम विल इनपुट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. दैट मींस व्हेन यू एक्चुअली क्रिएट दिस कोड, व्हेन यू एक्चुअली राइट दिस कोड int ARR is equal to new int 5, what happens in the computer's memory, this new keyword will allocate some space in the computer's memory, so that when the user inputs the values, those values get stored in those memory spaces.
सो द न्यू कीवर्ड यही काम करता है, वो क्या करेगा, हाउ मेनी स्पेसेस, 5 मेमोरी स्पेसेस को वो रिजर्व करके रख देगा मेमोरी, कंप्यूटर्स मेमोरी में। तो एक मेमोरी स्पेस का, फर्स्ट वाले मेमोरी स्पेस का नाम होगा ARR0। ARR is the name of the array. So ARR0, 0 means index number 0, क्योंकि ये 5 इसका साइज है, तो इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। सो 0 1 2 3 4। तो ARR0 पर एक एलिमेंट के लिए जगह खाली रहेगा, ARR1 के लिए एक एलिमेंट, एक जगह खाली रहेगा, ARR2 इसके लिए एक मेमोरी स्पेस खाली रह जाएगा, मतलब रिजर्व कर लेगा। दिस न्यू कीवर्ड विल रिजर्व ARR4, and here this is how we will, this is how the new keyword has reserved 5 memory spaces, 1 2 3 4 5, starting from index number 0 to 4. Now these places are now empty because no value has been assigned to these memory spaces right now. हमने कोई values नहीं डाला, assign नहीं किया, कोई initialization नहीं किया array को। ये values कहां से आएगा, यूजर से आएगा। यूजर सब कैसे लूंगा, फॉर लूप का यूज किया जाता है, फॉर लूप का यूज करेंगे टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। यू सी हाउ वी विल यूज द फॉर लूप। तो फॉर इंट आई, दिस इज द काउंटर वेरिएबल ऑफ द फॉर लूप। अब 0 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज द इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, अब सोचो मुझे लेस देन क्या लिखना है, तो 0 से 4 तक जाना है, तो 0 तो स्टार्ट कर दिया, अब 4 तक जाना है, तो लेस देन 5 लिखूंगा बिकॉज 4 इज जस्ट लेस देन 5। इसीलिए मैंने लिखा आई लेस देन 5 बिकॉज आई हैव टू रीच टिल 4, देन आई प्लस प्लस। एंड इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर में मान लो स्कैनर क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑब्वियसली इनपुट लोगे तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएटेड होना ही चाहिए, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये सब तो चीजें जानते ही हो तुम लोग, कि इसलिए मैंने स्कैनर क्लास का डिस्कशन नहीं किया। तुम जानते ही हो जब इनपुट लेते हैं तो स्कैनर क्लास को हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही है। फिर प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट, मुझे स्कैनर का पैकेज को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट java.util.scanner, वो सब तो लिखना ही है। I am specifically talking about the code fragment where we are taking the input from the user. अब हम क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल का इनपुट लेते हैं, तो कैसे लेते हैं वेरिएबल का इनपुट, बिल्कुल उसी तरह से। तो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है ARR0, उसको मुझे फिल करना है, तो कैसे लिखूंगा, ARRI, क्योंकि I का वैल्यू सबसे पहले 0 होगा, तो ARRI इज इक्वल टू sc dot next int. This is how we also take the input from the user in variables also, sc dot next int. The object name is sc, so we will write sc dot next int. for loop बंद हो जाएगा। ये पूरा for loop execute करने के बाद क्या होगा, all the memory spaces will be filled by the values inputted by the user। क्यों, जैसे इसको ड्राई रन करके देखते हैं, for int I is equal to 0, तो I का वैल्यू अभी 0 है, कंडीशन अभी ट्रू है, 0 is less than 5, so it enters into the for loop। यूजर ने अभी मान लो कोई वैल्यू दिया, फर्स्ट वैल्यू दिया 2, यूजर ने 2 इनपुट किया, तो दैट 2 विल एंटर इनटू ARRI, मींस I का वैल्यू 0 है, दैट मींस ARR0, I का वैल्यू 0 है, ARR0, तो ARR0 में ये वाले पोजीशन पर ARR0 में क्या चला जाएगा, वो 2 जो यूजर ने भी एंटर किया, फर्स्ट वैल्यू। अब यहां से फिर I प्लस प्लस हो गया, I becomes 1, 0 से 1, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, 1 is less than 5, it enters into the for loop once again। फिर से वही है, sc dot next int, लेकिन वो कहां पे अब इस बार जाएगा, sc dot next int ARRI, I का वैल्यू अभी 1 है, मींस ARR1, so ARR1 इधर, so let the user enters 3 this time, so this 3 goes and gets stored in the memory allocated for ARR1। again I becomes 2, I plus plus happens, and I is less than 5, yes, 2 is less than 5, condition is true, enters into the for loop once again, ARRI, I means 2, so ARR2 means this position। now whatever value is inputted will go through sc.nextInt to this ARR2, say the value inputted is 4,
and 4 goes and gets stored in ARR2 due to this code. Then again, I plus plus happens, I becomes 3. 3 is less than 5, of course. Again, the same thing happens. ARRI means 3, ARR3. So this position is now filled by the value with whatever value user enters, say 7. So 7 goes and gets stored in ARR3 here. Then again, the same thing repeats. 4 हो जाएगा because of I plus plus. 4 is less than 5, obviously. ARR4, so whatever value, say 10. So 10 gets stored in ARR4. Again, I plus plus happens, I becomes 5. 5 is less than 5. No, this condition is false. It comes out of the for loop. Hence, for loop ke bahar aa gaya, and what we are left with, we have actually filled all the memory spaces which were allocated for these elements by the new keyword. तो न्यू कीवर्ड ने जो मेमोरी स्पेसेस को रिजर्व करके रखा था, उसमें सारे वैल्यूज को हमने डाल फिल अप कर दिया, और ये वैल्यूज प्रोग्राम में इनिशियलाइज्ड नहीं किया गया था. दीज वैल्यूज वेर रादर इनपुटेड बाय द यूजर ड्यूरिंग रन टाइम. So this is very important. Take a note of this, my dear students, कि हमने किस तरह का कोडिंग का इस्तेमाल करके हमने यूजर से वैल्यूज को इनपुट किया. This is very, very important that using loop, we did this. We will actually do this, implement this coding in a program that we will discuss today. And we will also do it on BlueJ. If you remember, in the last lecture, lecture number 2, I emphasized that simply don't watch this video without taking down the notes and without writing these notes in your notebook. This is number 1. Second thing, the programs that we are discussing in the class must be run and compiled and run by you on your software, on your computer. You have to install the BlueJ software. It is free to install. You go to the website bluej.org, which is the official website, bluej.org. Those who do not have still BlueJ software installed in your computer, you should download it at the earliest, install it, and then run these programs. This is very, very important to actually run the program and get the output. तो ये हमने input सीख लिया कैसे input करें. Now we will see a program, and we will also run this program in BlueJ today. Okay, program to input 10 numbers into an integer array and find the largest number. मतलब इस प्रोग्राम में मुझे दो चीजें करनी है. We have to input 10 numbers from the user into the array, and also we have to find that out of these 10 inputted numbers, which number is the largest number. So two चीजें हैं, दो चीजें हैं. एक तो input करो 10 number, and not only that, you have to also find out which is the largest number out of those 10 numbers. So obviously, very simple program. Now this first part, inputting 10 numbers, is something which I have just explained right now. So first of all, how do we start this program? We will obviously need the scanner class for inputting. And whenever you need the scanner class, you need to import the package java.util, which contains the scanner class. So I have first imported the package java.util package asterisk, and this package contains the scanner class. Now I created the class. The class name is largest. Then public static void main, this method is created over here. Then what have I done? I have created an array. Int a is equal to new int 10. So the name of the array is a. The data type of the array is int, and the size of the array is 10, because here we have to input 10 numbers. So the length or the size of the array is 10. There is another variable, created over here at the same time, which is max. Max is initialized to 0. Here max का जो initialization किया गया 0 के साथ, this is optional. Simply you can just declare the variable max and a semicolon. That is also fine. If you don't want to write this equals to 0, it's also okay in this program. Okay, this is just an optional thing. Now, my dear students, here, if you see further, what is the thing? This statement has
two things declared together, one the array and the max. You could have also written it in different lines. Say int a, this is the array declaration, is equal to new int 10 and a semicolon. ये कर सकते थे. Next line में तुम int max, this variable को यहाँ पे declare and initialize कर सकते थे. इस वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन. तो ऐसे तो करते हैं. जैसे वेरिएबल्स में भी अगर मेरे पास दो वेरिएबल है a, तो इंट a, दूसरा वेरिएबल को डिक्लेयर करना है b, वो भी अगर इंट टाइप का है, या तो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में इंट a सेमीकोलन, नीचे इंट b सेमीकोलन, ऐसे लिखो. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज इंट a comma b semicolon. This is also okay, and this is better, no? Why to waste, two lines, or why to write more than when you can write just a little less? So for the same purpose, so instead of writing this in two different lines, we can write it in one single statement like this, separated by a comma. I hope this is clear. Now next is, we have created an object of the scanner class. Obviously when we need to take input, we need the object of the scanner class. So scanner object is created, name of the object is sc. Then what got printed on the output screen for the user to see? Enter 10 numbers. So say this is the terminal window or the window for the user. ये है terminal window, output window. Terminal screen या terminal window, जो भी बोलो. The first message that got printed is enter 10 numbers. User will be able to see this message. When the user sees this message, he realizes, okay, I have to enter 10 numbers. So say he enters the first number 5 and presses the enter key. He enters the first value 5. Now what actually happens in the back, at the back end? This is whatever is happening at the front end. ये जो terminal window खुला हुआ है, जो भी हो रहा है ये front end की बात है. What happens at the back end? Now that also we have to understand. The moment this a array is declared over here, what actually happens, as I just explained in the previous slide also, 10 memory spaces will be reserved, and it will be reserved by this new keyword. The purpose of this new keyword is to allocate memory in the computer. So this new keyword will reserve 10 memory spaces. So what it will do, the name of the array is a, so a, and the index number will start from 0. So AR0 इस position के लिए एक element के लिए जगह छोड़ देगा, blank space. A1 for this, then A2 for this, a memory space is created. In the similar way, A3, then A4, A5, A6, A7, A8, and A9. 0 to 9 means 10 elements. 0 to 9 means 10 elements can be accommodated in these blank memory spaces which have been allocated by new keyword. So this happens as soon as this code is executed. At the same time, max, a variable, is also declared and it got initialized by the value 0. So हमारा जो max variable है वो भी यहाँ पे create हो जाता है and उसकी value initialized होती है 0 के साथ. ये पर्दे के पीछे पहले हो चुका है. After that ये message declare हुआ था, enter 10 numbers. Looking at this message, user enters 5. ठीक है. Now next what happens behind the curtain, means at the back end, is a for loop starts. Int I equals to 0. So I is a variable that also got created. Value initialized is 0. And then this condition is checked. I less than 10. Of course, 0 is less than 10. So it enters into the for loop. Then what happens? AI is equal to sc dot next int. AI, I is 0. So A0, this is right now A0. So A0 means this position is being referred to. A0. So A0 may, that value which the user has entered just now goes and get stored. The user has entered 5. So 5 goes and get assigned at AI, means A0. So ye A0 may 5 goes and get stored. Now say the user has entered the next value 7. So
At the same time, what happens, this for loop also ends over here and it goes to the update expression. This is how the for loop actually works. I plus plus, so I becomes 1. This condition is checked. I less than 10. Yes, 1 is less than 10. Condition is true. It enters into the for loop once again. AI, that means I is 1 right now. You see, I is 1. That means it is referring to A1. So A1 means this particular position is now filled with the value the user has just entered, which is 7 this time. So A1 is filled with 7. Again, this I loop, for loop goes to I plus plus. So I becomes 2. The condition is checked. I is less than 10. Yes, 2 is less than 10. Now say the user enters 9 and that 9 goes and gets stored in AI. I is 2. That means A2. So A2 is filled with 9. So my dear students, you must be able to understand right now how each and every element is getting filled into the computer's memory, uh, which have been already reserved by the new keyword. तो सारा भर जाएगा from 0 to less than 10. Less than 10 means 0 to 9. तो say the user enters these values. अब मैं randomly लिख देता हूँ. मैंने 3 values कैसे enter हुआ तुम लोगों को explain कर दिया. तो this cycle keeps on repeating until I becomes 9. ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक I is 9, क्योंकि I जब 10 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. I less than 10 means 10 less than 10 जब हो जाएगा तो false हो जाएगा. It comes out of the for loop. So until I is 9, from 0 to 9, this loop keeps on iterating and keeps on you know accepting values and filling the values in the computer's memory. तो मान लेते हैं user enters these numbers 5 7 9 हो गया. इसके बाद maybe 12, maybe 8 4 3 1 and a 0. So कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and maybe one more value is 13. Okay, now here let me fill up. Let this be 18. Okay, let this be 18. So 12 ke baad A4 is 18, right? So this is 18. Then you have 4, then you have 3, then you have 1 0 and 13. So here the maximum number is 18. So in fact, we have to display the largest number. So the output should be 5, 7, 9, 12, 18, 4, 3, 1, 0, 13. And it is in this way it has filled 5, 7, 9, 12, 18, 4, 3, 1, 0, 13. So each and every element got filled up. जो user ने enter किया वो memory में भी भर गया. Back end में भी वो चीज भर गया. Now max is that variable which was already declared and was initialized by the value 0. अब उसमें क्या हो रहा है? अब उसमें द फर्स्ट एलिमेंट बोले तो A0, मतलब 0th पोजीशन पर जो एलिमेंट है दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट का मतलब A1 नहीं, फर्स्ट का मतलब A0. तो 0th पोजीशन पर 0th इंडेक्स नंबर वाला जो एलिमेंट है मींस 5, दैट इज गोइंग एंड गेटिंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल मैक्स. तो मैक्स का वैल्यू अभी चेंज हो जा रहा है एंड A0 पर जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट दैट इज being initialized, that is being assigned to max. Now you may be wondering right now, isn't it, sir ये क्यों कर रहे हैं? Why are we doing this after all? क्यों हम array का जो 0th position का element है उसको हम max में store क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद तुम लोग इस चीज को समझ जाओगे, रियलाइज कर लोगे कि ये क्यों कर रहे हैं. आगे थोड़ी देखते हैं. होल्ड योर पेशेंस, तुम्हें समझ में 100% आ जाएगा. तो ये हमने कर लिया. हमने क्या किया? अभी मैक्स जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज क्रिएट किया था, डिक्लेयर किया था, उसमें अभी सबसे पहले हमने क्या किया? एरे का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0th पोजीशन वाला एलिमेंट को हमने असाइन कर दिया. नेक्स्ट द फॉर लूप स्टार्ट्स एंड फॉर लूप का देखो, इट स्टार्ट्स विद देयर इज अ 1. ओके, दिस 1 इज देयर. I is 1 this time. So for loop starts and for loop starts from I1. So I का value again becomes 1 right now. So it was, ये तो I पहले हमारा 2 3 करते करते 10 हो चुका था ना इस केस में. जब 10 हो चुका था, अब ये फॉर लूप फिर से स्टार्ट हुआ, I का वैल्यू फिर से 1 हो गया. I is 1 means another for loop is created and this condition is checked. 1 is less than 10, of course 1 is less than 10. Then what happens? It enters into the for loop. For loop के अंदर एक if ब्लॉक है. if में क्या कंडीशन चेक हो रहा है? if I means 1, that means A1 is pointing towards this element 7.
A1. So check हो रहा है, if 7 is more than max, max में भी क्या stored है 5. That means first और ये second वाले element को अभी compare कर रहा है, कौन बड़ा है. So if A1, 1 means A1 is 7. So if 7 is more than max, which is 5, and then it will enter into the if block. And this is true. 7 is definitely more than 5. 7 is more than 5, isn't it? So when this is true, then what happens? Max is updated by the value which is at AI. That means which is at A1. I ka value is 1. So A1 means it is 7 right now. So 7 is being stored in max. अभी max का value 5 से हटकर 7 हो जा रहा है. So max is now 7. Again what happens? तो एक चीज तुमने ध्यान दिया कि max ने intelligently क्या काम किया. max ने फर्स्ट दोनों एलिमेंट को कंपेयर किया और उसमें से जो ज्यादा बड़ा है उसको अपने में स्टोर कर लिया. पहले 5 को स्टोर किया था और सबसे पहले तो 0 को स्टोर किया था, लेकिन उसके बाद फिर उसने 5 को स्टोर कर किया था और फिर बाद में देखा कि नहीं 5 से भी बड़ा नंबर है 7, उसके जस्ट एडजेसेंट नंबर, तो उसको फिर अपने में स्टोर कर लिया हियर. तो मैक्स बड़ा इंटेलिजेंट है. व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू कंपेयर ईच एंड एवरी नंबर एक के बाद एक, एंड जो मैक्सिमम होगा ना सबसे ज्यादा उसको फाइनली अपने में स्टोर करेगा. देखो जैसे 5 7 को कंपेयर करके 7 को अपने में स्टोर कर लिया. उसके बाद इफ ब्लॉक यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ फॉर के पास जाता है, फॉर का ब्लॉक यहाँ से फिर ऊपर इसको भेज देगा. साइकिल, फॉर इज द लूप, तो ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस मीन्स आई बिकम्स 2. आई का वैल्यू अभी 2 है. फिर ये कंडीशन चेक होगा, 2 is less than 10. Yes, of course, it enters into the for body. If I means 2 right now. So A2 means 9 this time. If A2 9 is more than max, max is 7 right now. So 9 is more than 7, it is still true. तो फिर ये if में enter कर जाएगा and max में अभी क्या चला जाएगा, I value is 2, that means A2. So A2 is right now 9. So now 9 will go and get stored at max. So 7 को भी हटा दिया 9. That means उसने फिर कंपेयर किया अभी 9 के साथ एंड देखा कि नहीं 7 से बड़ा है 9, सो वो 9 को अपने में स्टोर कर लिया. समझ रहे हो ना मैक्स का क्या काम है. मैक्स इज एक्चुअली कंपेयरिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट वन बाय वन. इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था मैक्स को A0 से, ताकि फर्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाए. अब समझ में आ गया व्हाई डिड आई स्टोर द फर्स्ट एलिमेंट 0th पोजीशन के एलिमेंट इन मैक्स, सो दैट फर्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन स्टार्ट हो एंड उसके साथ कंपेयर करते करते नेक्स्ट वाले के साथ कंपेयर करें, फिर उस अगर उसमें वो मैक्सिमम है तो उसको उसमें स्टोर कर ले, फिर उसके नेक्स्ट के साथ कंपेयर करें एंड ग्रेजुअली एक के बाद एक एलिमेंट से चेक करता जाए एंड व्हिचएवर इज द लार्जेस्ट विल गेट फाइनली स्टोर्ड इन मैक्स. अच्छा, अभी फिर ये लूप ऊपर जाएगा, i बिकम्स, अभी i का वैल्यू 2 से 3 हो जाएगा. देन द कंडीशन इज चेक्ड, I less than 10. Yes, 3 is less than 10. It enters into the for body again. I means 3. So A3 is pointing towards 12. 12. A3 is 12. 12 is more than max. Yes, max is 9 right now. Dekho, max is 9. 12 is more than 9. So this is again true. It enters into the if block. So max is now updated with AI. Means I is 3. So A3 means 12. A3 is 12. So 12 goes and gets into max. तो अभी तक जो कंपेयर किया 5 7 9 12, उसमें इन चारों नंबर्स को कंपेयर करके उसने देखा कि 12 इज द लार्जेस्ट एंड यू सी मैक्स इज राइट नाउ स्टोरिंग 12. देन व्हाट हैपेंस, ऊपर जाता है i प्लस प्लस मींस 4 बन जाता है. I is less than 10. Yes, 4 is less than 10. It enters into the for loop once again. I position is 4. I value is 4. That means A4 is greater than max. A4 matlab 18. Yes, 18 is greater than max. Max is 12. Yes, 18 is greater than 12. So again, if condition is true, it enters into the if block. Now max is again updated by AI. I is 4 right now. So A4 means 18. So 18 goes and gets stored in max. So max ka value will be 18 ho gaya. So now, till now, it has checked from A0 to A4 and the maximum number was 18 so far. So 18 got stored. Then what happens? Again, this for goes up, I plus plus, I becomes 5.
5 हो जाता है, कंडीशन चेक करता है, I is less than 10, yes 5 is less than 10, it enters into the for block again. AI means I is 5 at this time, so A5 is pointing at 4. So is 4 greater than max? Max is 18. Is 4 greater than 18? No. This time if block is false. AI means A5, which is pointing towards 4, is not greater than max, not greater than 18. So for block के अंदर, I mean if block के अंदर ये enter अब नहीं करेगा this time because this condition gets false right now. So max is not updated by any value. So this statement will not happen this time because if was false. तो if हुआ नहीं, यहाँ से फिर वो डायरेक्ट ऊपर चला गया, I plus plus I becomes 6. So you realized one thing कि यहाँ पे इस बार मैक्स का वैल्यू रिमेन्स द सेम 18, क्योंकि वो कंपेयर करके देख लिया कि जो एडजेसेंट वैल्यू था 4 वो उससे छोटा है. द वैल्यू विच मैक्स इज होल्डिंग राइट नाउ वाज लार्जर, so let that value remain in max. So the same thing happens, so 18 abhi bhi stored hai. So in this way, my dear students, you will realize that this cycle will repeat and it is continuously checking each and every element of the array, and whichever is the maximum one is finally getting stored in max. The way you saw कि 18 और 4 को यहाँ पे check किया गया, तो फिर 4 छोटा था तो 18 was retained in max. And similar way it will compare with the next element 3. So again it is 3 smaller, so it will retain 18. फिर 1 से check करेगा, it will still retain 18. फिर 0 से, फिर 13 से. So finally 18 will remain in max. अगर कुछ इससे बड़ा मिल जाता है, so that will go and get stored in max. So when the for loop is finally iterated, so what happens at the last, max is storing the maximum value 18. And after that, after the for loop is executed, what is being printed? System.out.print, the largest number is equal to max, because max is holding the largest number, and the program ends. So this is a very easy program, but a conceptual program. Now, there's nothing to memorize in a program. You have to simply have the proper concept about this program, and this is very super easy to understand. Now I will take you to the BlueJ screen and I'll run this program for you so that you can actually see the execution of it. So my dear students, here I have already written the program in BlueJ environment. Now I will just run the program. It is the same program which I explained just now. Let me compile it first. You see, class compiled, no syntax errors. So now let us run it. Void main. See, the terminal window has opened. It is asking me enter 10 numbers. तो मैं enter करता हूँ, say 3 enter की, फिर 5, फिर 1, फिर 16, 3, फिर 34, फिर 12, फिर 76, फिर 45, फिर 3, again a 3, then 9, and it displays largest number is equal to 76. The moment I press 9 means the 10th element got entered, and back side में back end में तो वो सब चीजें हो रही थी जो मैंने dry run में explain किया, and finally max had stored 76 in it. So last में क्या print हो गया? Largest number is equal to 76. Such a beautiful program. So this is a very, very important program that comes in your exam. Now, dear students, I can modify this program. Suppose I have to find out the smallest number. ये जो program हमने किया अभी, my dear students, this program was to find out the, largest number, isn't it? Let the program be find out the smallest number. So the small and minor change I have to do over here. Here I have to, just change the sign from greater than to less than. That's it. And you will get the output. Of course, थोड़ा common जो changes होनी चाहिए वो होना चाहिए कि class का नाम largest ना लिखकर हम smallest कर दे तो अच्छा है. In fact, that is not going to affect the output of the program at all. तुम अगर class का नाम कुछ भी लिख सकते हो, it does not matter. लेकिन देखने में अच्छा लगेगा ना कि स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे हो तो क्लास का नाम लार्जेस्ट लिखोगे,
तो देखने से तो अच्छा नहीं लगता है, फॉर दैट पर्पस ओनली, अदरवाइज आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको स्मॉलेस्ट कर देना, फिर इस मैक्स को मिन कर देना, मिनिमम निकाल रहे हो तो। वैसे मैक्स भी छोड़ोगे तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज यू कैन कीप एनी नेम्स फॉर वेरिएबल्स। यहाँ पे ऑब्वियसली मिन हो जाएगा इफ यू चेंज इट टू मिन। द ओनली कोडिंग पार्ट में जो एक्चुअल जो कंपाइलर के लिए जो तुम्हें चेंज करना है वो है ये वाला पार्ट, दिस ग्रेटर देन शुड बी रिप्लेस्ड विद लेस देन, एंड यू विल सिंपली गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ लार्जेस्ट को बना दोगे स्मॉलेस्ट नंबर, and you will simply get the output, whichever is the smallest number, you will get that. The only thing that you have to change, you have to bring the change in the logical part of this program is this greater than should be replaced with less than. तुम लोग try करके देखना, this is the program. You will get the smallest value. This is your homework that you will do on your own. All right. Now coming to the next thing that we have in our list, in our slides today. Yes, types of arrays. इस चीज को मैं भी अभी डिस्कस करूंगा. Types of arrays. It is also mentioned in the syllabus given by the council in the reduced syllabus also. There are two types of arrays, as you can see on the screen. Single dimensional array which has only one subscript, and two dimensional array which has two subscripts. अगर सिलेबस को ध्यान से देखे हो तो वहां सिर्फ हमें टू डायमेंशनल एरे का डेफिनेशन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है. You don't have any programs on two-dimensional array. जितना भी inputting, accessing values, फिर searching, जो भी programs हम करेंगे array में, all of the programs are only for single-dimensional array. This is in your syllabus. Two-dimensional array का बस नाम जानना है and definition जानना है. You don't have any programs to do on your two-dimensional array in your ICSE semester 2 syllabus. अब ये सिंगल डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे या टू डायमेंशनल एरे होता क्या है? वेरी वेरी सिंपल. अभी तक जितने भी हमने एरेज पढ़ा ना, दिस काइंड ऑफ एरे, जितने भी हमने एरेज पढ़ा 2 6 मे बी 3 1, this is a single dimensional array. Whatever array you have learned so far is a single dimensional array because it has only one subscript. One subscript का मतलब ये जो 6 का जो पोजीशन है, तुम कैसे 6 को आइडेंटिफाई कर रहे हो? बाय A0. 2 को कैसे कर रहे हो? A1. 3 को कैसे कर रहे हो? A2. 1 को A3. So this number is known as basically the subscript. So how many numbers you are having in this square bracket? Just one number, no? One number, no? This is just a single number. So this is the subscript. One single subscript is there for each and every element. So this is known as, such an array is known as a single dimensional array. Now, when we talk about multi-dimensional array and specifically two-dimensional array, here we have two subscripts. Now, two-dimensional array को समझने के लिए तुम मैथ्स में तुम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े हो ना, मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स कैसे? सपोज तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ऐसे लिखते हो ना, 2 3 4 5. So you have, columns. There are two columns and there are two rows. So when this kind of, this is also a collection of, similar data type elements in one single variable. So this two-dimensional array is actually known as a matrix. In fact, ये भी matrix है. Okay, this is also a single dimensional array is also matrix which has only just one row, and here we had 4 columns, 1 2 3 4 columns, but one row. Lekin two-dimensional matrix, it has more than one column and one rows. This is a two-dimensional matrix. That means two-dimensional array. So how each and every element is represented? So हम लिखेंगे इसका दो subscript हो सकता है. In fact, दो subscripts होता है. This 2 is represented by, it is present in which row? First row and first column. So ये जो 2 का position है, it will be represented by A1, in fact 0 0. 0 is representing the index number. So 0 0th row 0th column. जब हम कंप्यूटर में बात करेंगे तो 0 से 0 के टर्म्स में बात करेंगे. So this 2 is present in 0th row 0th column. So A00 is actually pointing towards this 2. This 3 is pointing towards, it is present in 0 के बाद 1 and यहाँ 0 के बाद 1. So this is present, this 3 is present in one first column and 0th row.
0th रो एंड 1th फर्स्ट कॉलम। तो इस रो को पहले लिखते हैं, सो 0 एंड कॉलम नंबर को बाद में। सो 0 1 0 0th रो एंड 1th कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है? 3। सो 0 1 इज रिप्रेजेंटिंग 3। ये जो 4 है ये कहां पे प्रेजेंट है? 1th row and 0th column में। That means this 4 is actually A10, and this 5 is present in 1th row 1th column. So this is A11। so you see each of the elements 2 3 4 5 is represented by two subscripts. So this is what two-dimensional array is. That's it. In your exam, again, I'm telling you, you only have the name to know that there are two types of arrays, single dimensional and double dimensional, and the definition of two-dimensional array. You don't have to, do any programs on two-dimensional arrays. Very simple. That's all for today, my dear students. In your lecture 3, we will meet very soon with lecture 4. Till then, God bless you. Happy learning.